Yes, is my screen visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so please check recording icon. Yes, I'm audible. मेरी मेरी आवाज आ रही सबको? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आ रही सबको? I'm audible. सर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। ठीक है। और मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, यस sir. यस सर। With the uh, classification of a microcontroller based upon the memory architecture. Okay, so based upon the memory architecture, we have Neumann architecture as well as Harvard architecture. Okay, so von Neumann architecture is also called as a Princeton architecture. And the difference between the Harvard and the basic difference lies between that the memory, that is the data and program memory, is in the same. They are the same. So when you talk about von Neumann architecture, the data memory as well as the program memory are one and the same. Are one and the same. So you have a CPU, so your data memory as well as program memory are the same thing. So you have data bus, you have address bus, and you have control bus. So this is your data bus, this is your address bus, and this is your control bus. So this is a basic difference. Two different memories. So you can access the instructions and the binary codes are stored in the program. Sorry, your voice is breaking.
यस, क्या हो रहा है? सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रही है? नहीं सर, ब्रेक हो रहा है बहुत। हाँ, अभी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Okay. So this is the von Neumann architecture, and see the Harvard architecture. This is the Harvard architecture. Now in the Harvard architecture, your data memory as well as program memory are the different. So to access your data memory, you have a separate buses. You have a separate buses. And to access your program memory, you also have a separate buses. Okay, you have a separate buses. So this is your data bus, this is your address bus, and this is your control bus. As far as accessing program memory is concerned. And if you want to access your data memory, this is your data bus, this is your address bus, and this is your control bus. So I can say we can access the data memory as well as program memory at a time in Harvard architecture. But that is not the case in von Neumann architecture. If I want to access the data, then the data will be accessed first, and then we can go with the accessing of the program memory, or vice versa. If I want to access my program memory first, then we can access data memory, but not both at a time. Not both at a time. That is a major difference between Harvard and von Neumann architecture. यहाँ तक किसी को डाउट है? आई थिंक दिस पार्ट आई हैव क्लियर. यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. Okay. No, sir. Now I think I have started with the other classification of the microcontroller based upon the instruction set. So based upon the instruction set, we have two types. One is RISC and the other one is CISC. So RISC and CISC, these are the we can make a classification of a microcontroller depending upon the instruction set. So we can have a microcontroller which is RISC, we can have a microcontroller which is CISC, or CISC based or RISC based. Now here we will talk about the RISC first, then we will see the CISC. So when you talk about the RISC, R stands for reduced. R stands for reduced. So RISC, in RISC, it is a reduced instruction set computer. It is a reduced instruction set computer. Computer या फिर computing. So in different books you have the word C stands for computing or C stands for computer. So reduced instruction set computer. Okay. So I have started with the explanation of RISC. Okay. So when you talk about the RISC, in the RISC, the main important, the main important point which will differentiate RISC from the CISC is that in the RISC, the instructions are simple. So here we will take the characteristics of RISC one by one. So the first characteristic is the instructions are simple. The instructions are simple. The instructions are simple. Okay. Now what do you mean by instructions are simple? These instructions are simple means suppose there are 5 instructions, 1, 2, 3, 4, 5. So every instruction is simple. Every instruction is simple. Now what does it mean? It means to execute a single instruction, you would require one clock. Now clock means these are the clocks. And one clock cycle will start from here to here. This is one clock cycle. So to execute this instruction can be executed in one clock cycle. The instruction can be executed in one clock cycle. Okay. Similarly, the second instruction can be executed in one clock cycle. So these instructions are simple. These instructions are simple.
Simple means one single instruction can be executed per clock cycle. For per clock cycle. हमने कल ही पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास 3 साइकिल्स होते हैं. इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट. बराबर है. और तीनों को मिला के हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं. तो वही अगर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, उसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो आई वुड रिक्वायर 1 साइकिल. आई वुड रिक्वायर 1 साइकिल. अब किसी इंस्ट्रक्शन को 1 साइकिल लगता है, किसी को 1.5 साइकिल लगता है. सो इन एन एवरेज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन अंडर रिस्क to execute the instruction under RISC, you require 1.5 cycles. 1.5 cycles in an average. So that is why the first characteristic of RISC is the instructions are simple. Okay. लेकिन यहाँ पे क्या ड्रॉबैक है? यहाँ पे एक ड्रॉबैक है that instructions require less time to execute. I understood. Okay, I understood. But इससे क्या होगा? Cycles per instruction will be reduced. Cycle per instructions will be reduced. But इसका एक disadvantage ये हो जाता है कि number of instructions per program will increase. Number of instructions per program will increase. Okay, number of instructions per program is increase. अब इसका क्या मतलब होता है? See here now. Now suppose if I want to add add two numbers. If I want to add two numbers, so you require simple instructions. I'm talking about under the RISC. If I want to add two numbers, now actually ये addition of two numbers कैसे होता है? पहले क्या होता है? First, पहले बात, what will happen first? Your CPU will take the two numbers from the memory. Okay, then that CPU will load that two numbers from the memory to the internal register. Okay, to the internal register. So what is happening? You will first load, then you will execute. Now what do you mean by loading? Please pay attention, this is important. Loading means there are words which is called as loading as well as storing. Please try to understand, these words are important. Now when you say loading, that means the data will be taken from the memory to the register. And what do you mean by storing? Storing means taking the data from the register towards the memory. Okay, please see the difference between loading and storing. Loading means taking the data from the memory and loading into the register, and storing means taking the data from the register and storing into the memory. Okay, that is a major difference between loading and storing. अभी अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है और ये मेरे दोनों के दोनों नंबर अगर मेरे मेमोरी में है, तो पहले मुझे उसको रजिस्टर में लाना है. सो आई एम डूइंग लोडिंग एंड देन एक्चुअली आई एम डूइंग ऑपरेशन. एग्जीक्यूशन करने के पहले आई विल हैव एन ऑपरेशन ऑफ एडिंग ऑपरेशन. और आपको पता है ऑपरेशन कहाँ होता है? एएलयू में होता है. सो फर्स्ट यू विल लोड, then you will make an operation of adding the two numbers, then you will actually execute, and that result will be stored in the register. And if you want that register value, the result can be stored back into the memory. So that is called as actually storing. Now to load and to make the operation, you require separate instruction. That is also the meaning of simple. सिंपल का मतलब ये होता है लोड करने के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन करने के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन, बाद में अगर मुझे वो रिजल्ट मेमोरी में स्टोर करना है उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन. दैट इज नथिंग बट स्टोरिंग. सो डोंट यू थिंक लोड, ऑपरेट एंड स्टोरिंग you require three instruction, but this is not the case in CISC. तो मैं जब CISC पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि बिकॉज दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स. एक ही इंस्ट्रक्शन, एक तीर
3 निशाने, यहाँ पे वैसा नहीं, 3 निशानों के लिए 3 अलग अलग तीर, that is the meaning. Okay, so simple means this instruction will actually load, this instruction will actually do the addition, this instruction will actually store the result back into the memory. So for to carry out every task, you have separate instruction. That is also the meaning of simple. That is also the meaning of simple. Okay, so that is why under the reduced instruction set computer, the instructions are simple. The instructions are simple. The meaning of simple is that to carry out every task, you have dedicated instructions. You have dedicated instructions. And to have and because of this, अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है? You are जो मुझे टास्क करना है एडिशन का, 2 नंबर को ऐड करना है, उसके लिए मुझे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ रहे हैं. ओके, दैट इज द ड्रॉबैक, दैट इज द ड्रॉबैक. और एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्लॉक पल्स लगता है. इन एन एवरेज 1.5 साइकिल्स लगते हैं, 1.5 साइकिल्स लगते हैं. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. सर वो साइकिल्स वाला कंसेप्ट एक बार फिर से समझाए ना. ओके, सी हियर, दीज आर द क्लॉक पल्सेस. आपका हर आपका जो कुछ आपका ऑपरेशन है, एडिशन करो, जो भी कुछ करना है, एवरी ऑपरेशन, अगर अभी सपोज मैं आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम सेइंग आई एम ड्राइविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो द स्पीड हमको स्पीडोमीटर पे दिखता है. नाउ हियर अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो उसको कितना टाइम लगता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक पल्सेस. तो सिंगल क्लॉक पल्स कहां से, यहाँ से इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल स्टॉप हियर. सो ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज वन क्लॉक. तो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्लॉक लगता है. सपोज दूसरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज 1.5 लगता है, 1.5 क्लॉक लगता है. थर्ड को लगता है फिर से 1 क्लॉक. सो इन एन एवरेज इन अ रिस्क प्रोसेसर every instruction will be executed for 1.5 cycles, for 1.5 in an average. वैसे देखा जाए तो एक इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक पल्स उतना टाइम लगता है. ओके, नाउ हियर अगर एक इंस्ट्रक्शन को सपोज एक क्लॉक लगता है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक लगता है, और आपके प्रोग्राम में टोटल सपोज 5 इंस्ट्रक्शंस है. सो कैन आई से to execute the whole program, I require 5 clock pulses. Yes, I require 5 clock pulses. So in the RISC architecture, the execution time is less. और execution time less इसलिए भी है क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन सिंपल है. और सिंपल का मतलब मैंने अभी ये भी बताया, to carry out every task you have a dedicated instruction. ओके, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो पहले 2 नंबर्स मुझे मेमोरी से लेना है, बाद में रजिस्टर में डालना है, बाद में उस पर एडिशन का ऑपरेशन करना है, बाद में रिजल्ट जो आएगा वो फिर से मुझे वापस मेमोरी में डालना है. तो ये सब करने के लिए यू हैव डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शंस. तो वही एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए मेरे इंस्ट्रक्शंस मुझे ज्यादा लगने वाले. क्यों लगने वाले? क्योंकि हर एक टास्क करने के लिए डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शंस लगने वाले. सो दैट इज एक्चुअली द ड्रॉबैक. लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को कम टाइम लगता है. इंस्ट्रक्शन साइकिल जो मैंने कल पढ़ाया था, इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्राइजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट. ओके, सो टू कैरी आउट दीज 3 cycles you require 1 clock pulse. But at the cost of what? At the cost of the number of instructions per program will increase. अभी समझा आपको?
Yes, sir. Okay. So this is about the risk. We will take more characteristics of this risk. दूसरा characteristics ये है number of instructions require will be more. So if number of instructions अगर ज्यादा लग रहे हैं तो can I say you have a larger program size? Yes, you require a larger program size. You require a larger program size. और अगर larger program size है then you have a low code density. You have a low code density. अभी लो कोड डेंसिटी का क्या मतलब होता है? आपका प्रोग्राम ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको स्टोर करने के लिए, वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए भी तो आपको स्पेस ज्यादा लग रहा है. सो अगर स्पेस ज्यादा लग रहा है तो आपकी कोड डेंसिटी वो कम है, आपकी कोड डेंसिटी कम है. सपोज ये आपका एक मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी है. आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसकी साइज ज्यादा है, तो उसने ज्यादा ज्यादा साइज ले ली प्रोग्राम मेमोरी में. सो ज्यादा साइज ले ली, इसका मतलब कहने से इट इज लो कोड डेंसिटी, इट हैज अ लो कोड डेंसिटी. हाई कोड डेंसिटी नहीं है. हाई कोड डेंसिटी का हम कब कहेंगे? जब वही प्रोग्राम कम जगह लेता है. वही प्रोग्राम अगर कम जगह लेता है देन वी विल से हाई कोड डेंसिटी. लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ लार्जर प्रोग्राम साइज द कोड डेंसिटी इज रिड्यूस्ड. The code density is reduced. I hope this point is clear. I hope this is clear. Yes, sir. Okay. Now the next feature of the RISC, it has less addressing mode. It has less addressing mode. For time being, you just understand it has a less addressing mode. It has a less addressing mode. Addressing mode हम जब instructions देखेंगे 8051 के, तब हम addressing modes पढ़ने वाले. तो for time being, you just try to understand that it has a less addressing mode. Okay, it has a less addressing mode. Then what are the other remaining features? Let me check. Yes, it also has a less hardware. It has a less hardware requirement. It has a less hardware requirement. Abhi it has a less hardware requirement. Why? See here now. Now when you talk about a hardware requirement, it requires less because as I have told you that the instructions would be more for per program. The instructions would be more for per program because every task we have a dedicated instruction. Okay, we have a dedicated instruction. Now when we have this dedicated instruction, actually this task of carrying out would require more processing. यानी इसको ज्यादा लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा. Okay, so directly we are taking this from the program memory. Instructions हम कहाँ लेते हैं? program memory से लेते हैं. Okay, so program memory will have these instructions. Okay, program memory will have these instructions for instruction decoder. Okay, instruction decoder. आपका जो ये CPU है, in the CPU you have instruction decoder. हमने देखा था कि instruction decoder is present in the CPU, and these programs are decoded in the instruction decoder. Now these programs are simple. And simple programs will have simple binary code.
will have simple binary code. And to decode those binary code, you require less processing time. So instruction decoder में जो हम decoding करते हैं वो कम लगता है, because the instructions are simple, and these simple instructions will have a simple binary code. These instructions will have simple binary code, and to decode those binary code, you have less processing time in the instruction decoder. That is why hardware requirement will be less. Okay, that is why the hardware requirement will be less. Okay, so this is the reason. Because of simple instruction, your binary decoding will be less, and to decode those binary code, processing time will be less. That is why the instruction decoder are also simple. I hope you have understood this point also. Is it clear? Is it clear? Am I audible? Yes, sir. Okay. So we will proceed to the CISC now. हमने RISC के देखे we have seen different features of RISC. Now we will talk about the CISC. R stands for reduced. Here C stands for complex. Here C stands for complex. Now when you talk about the complexity of this, okay, now in this complexity, what does it mean? It means that every instruction is complex. Now you have to correlate with the RISC all the time. The every instruction is complex. It means there is a we have the instructions which will do multiple job. For example, 6 में अगर एक command है MUL means multiply. So this command will do what? This command will bring the data from the memory to the ALU. This command will also do the multiplication. And the result will also be stored back into the memory. So ये memory आपकी है, आपका डेटा यहाँ पे है ABC. ये डेटा मेमोरी में से लेके ALU में लाना, ALU में ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करने के बाद जो कुछ रिजल्ट है वो मेमोरी में डालना. Everything is done by the single instruction. That is why it is called as a complex instruction. Complex instruction set computer. Now, please correlate with the RISC. Okay. Now, this is the point. Next point is, it is a complex. So, instruction timing will be more. So, here to carry in an average, every instruction would require 2 to 13 clock cycle. RISC में देखो क्या था, 1 to 1.5. यहाँ पे 2 से लेके 13. यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है. So here there are some pros and cons, and there are some pros and cons. अभी यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है वो जो तीनों के तीनों काम करता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक है कि ज्यादा टाइम लगता है. To execute the single instruction, you require more timing as compared with the RISC. I hope you have understood this particular point. Have you understood this point? Yes, sir. So because of this, can I comment that less number of instructions per program? आपको RISC में suppose 5 instructions लग रहे थे, यहाँ पे आपको 3 ही लगेंगे. So that is why you require less number of instructions per program. But at the cost of what? Your number of cycles per instruction will increase.
increase. Next feature. Now here here addressing modes are more. यहाँ पे addressing mode ज्यादा है. Addressing modes are more. तो हम देखने वाले addressing mode क्या होता है. Just for time being, RISC में less है और 6 में ज्यादा है. Okay. The next would be you have a small program size. Program size is small, and because of small program size, what can you comment about the code density? High code density. Yes, high code density. High code density. So suppose this is your memory. छोटे छोटे प्रोग्राम कोड आप रखेंगे तो आपका कोड डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा ना. आपका आप छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स, क्योंकि स्मॉल प्रोग्राम साइज है तो ऐसा करके आपकी कोड डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी ना. सो यू हैव हाई कोड डेंसिटी. You have high code density. Okay, so this is also one of the feature. Then the next feature would be the important thing, your 8051 जो आपकी syllabus में है, that is based upon CISC architecture. ये point याद रखना. 8051 is based upon CISC architecture. Okay, it is based upon CISC architecture. इसमें और एक बात है, your CISC architecture is also based upon हार्वर्ड आर्किटेक्चर. ये भी याद रखो, ये पॉइंट मैं बोलना भूल गया. आपका रिक्स जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, दे आर बेस्ड अपॉन वॉन न्यूमन. They are based upon von Neumann. And your 6 is based upon Harvard. So indirectly, can I say 8051 is based upon Harvard architecture? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So your 8051 is a 6 computer, as well as it follows Harvard architecture. Okay. So that is also important point. So this is also one of the feature. The other feature would be I think we have covered. So in that case, you can have one-to-one differences between the RISC and the CISC. You can have one-to-one differences between the CISC and the RISC. Okay. So I think this point is very important, and I have covered the understanding of CISC, RISC, von Neumann architecture, and Harvard architecture. Any questions so far? Sir, hardware requirements. हाँ बोलो. So CISC का hardware requirements. हाँ the hardware requirement. RISC में क्या था हार्डवेयर रिक्वायरमेंट? Less. हाँ लेस. यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट विल बी मोर. अभी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट विल बी मोर. इसका एक रीजन, इसका एक जस्टिफिकेशन ये भी है. प्लीज पे अटेंशन नाउ. इसका एक जस्टिफिकेशन ये भी है. नाउ योर 6 डिपेंड्स अपॉन हार्वर्ड. And if you remember, your Harvard architecture is what? This is your Harvard architecture. This is your data memory. This is your program memory. And here you have a CPU. Okay. So this is your Harvard architecture. What about von Neumann? Von Neumann, only this. CPU, your data memory and your program memory एक ही इसमें है. अभी यहाँ पे दिख रहा है you have 2 block. Here you have 3 blocks. हार्डवेयर किसका ज्यादा है? हार्डवेयर किसका ज्यादा है? हार्डवेयर किसका ज्यादा है? यस, हार्वर्ड का ज्यादा है. यस, हार्वर्ड का ज्यादा है. हार्वर्ड में you have 2 separate memory for data, for program.
but in the von Neumann, you have a single memory which is used for data also, which is used for program also. So this also makes the clear justification that hardware requirement will be more. Hardware requirement will be more. दूसरा justification ये है that your instruction decoder, आपको पता है 6 में हर एक इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसका डिकोडिंग भी कॉम्प्लेक्स है. और अगर डिकोडिंग भी कॉम्प्लेक्स है तो आपका सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर बैठा है उसको भी ज्यादा प्रोसेसिंग लगता है ये इसको डिकोड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए. That is why this is also one of the reason we can say hardware requirement will be more, because decoding of the complex instruction would take more complexity, and the processing time will also be more. I hope this point is clear. This point is also clear. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. ये चीज याद रखना, 6 में हर एक इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स होने के कारण आपका डिकोडिंग भी जो रहेगा वो भी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ेगा, और वो डिकोड करने के लिए आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर विल रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मोर. ओके, वो वैसे रिस्क में था क्या? रिस्क में नहीं था. हर एक इंस्ट्रक्शन सिंपल था, इसलिए उसको डिकोडिंग भी करना सिंपल था. यहाँ पे डिकोडिंग करना कॉम्प्लेक्स है, वहां पे रिस्क में वो सिंपल था. ओके, सो इंस्ट्रक्शन डिकोडर वहां पे इजीली कर सकता था, सिंपली कर सकता था. यहाँ पे इट इज अ कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट विल बी मोर. कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट विल बी मोर. इज इट क्लियर नाउ? Is it clear? Yes. Okay. Shall we proceed further? Yes, sir. Now for the first module, the एक छोटा सा part बाकी है. Then I will declare that first module is completed. In the next lecture we can start freshly with the next module. So the topic is DMA. This is called as direct memory. Please write down in your register direct memory access. DMA. Direct memory access. So it will take only 10 minutes. So please be there with me for the next 10 minutes. I am going to explain you the DMA, direct memory access. But before I explain you this, you should understand what are the types of data transfer. What are the types of data transfer in, or what are the different types of data transfer techniques in microprocessor or microcontroller. What are the different data types of data transfer? हम data transfer किस तरीके से कर सकते हैं? In which environment? In microprocessor environment, या फिर आप बोल सकते हो microcontroller के environment में. So there are three. The first one is programmed IO. The second one is interrupt driven IO, and the third one is DMA. So you have this DMA in your syllabus. So actually we should know just in general what is a programmed IO and what is interrupt driven. Okay, so here when you talk about the programmed IO, अब इसका सिनारियो क्या पहले देखो. At one side you have
microprocessor or microcontroller. At other side, you have IO device. You have IO device. Okay. And other side, you have memory. You have memory. You have memory. Now see here, the data transfer is between IO device and the memory. The data transfer is between IO device and the memory, but under the supervision of microprocessor or microcontroller. You know, the data transfer will take place through the data bus. आपका डेटा कहाँ से ट्रांसफर होता है? डेटा बस से ट्रांसफर होता है ना. तो ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है between IO device and the memory, but under the supervision of microprocessor. तो ये हमको पढ़ना है. So there are three. First one is programmed IO. Now when you talk about this program IO, जब कभी IO डिवाइस को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं मेमोरी में, तो ये माइक्रो कंट्रोलर विल चेक द स्टेटस ऑफ IO डिवाइस कि IO डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना है नहीं करना है. तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑलवेज नीड्स टू चेक द स्टेटस ऑफ IO डिवाइस. तो प्रोग्राम IO में क्या होता है, ऑल द टाइम माइक्रो प्रोसेसर चेक्स द स्टेटस ऑफ IO डिवाइस. और जब स्टेटस IO डिवाइस को जब ट्रांसफर करना पड़ता है, तो सीपीयू क्या करता है, उसका काम जो ऑलरेडी जो कुछ काम कर रहा है, इट विल स्टॉप इट्स वर्क एंड इट विल गिव द एक्सेस ऑफ द डेटा बस टू द IO so that the data could be transferred between memory and the IO device. तो जब डेटा ट्रांसफर होता है, that time your microprocessor or microcontroller will be sitting idly, not doing any job. क्योंकि डेटा बस का कंट्रोल उसने IO डिवाइस को दिया है. क्यों दिया है? To carry out the data transfer between the IO device and the memory. So this is called as a programmed IO. This is called as a program IO. This is called as a program IO. अभी दूसरा क्या होता है, इंटरप्ट ड्रिवन. ये आपका प्रोग्राम IO हो गया. दूसरा क्या है आपका, इंटरप्ट ड्रिवन. इंटरप्ट ड्रिवन. अब पहले जो केस था, इसमें हर बार सीपीयू को चेक करना पड़ता था IO का स्टेटस. सीपीयू को हमेशा चेक करना पड़ता था IO का स्टेटस. दैट मीन्स सीपीयू इज वेटिंग फॉर IO डिवाइस. ओके. अब ये इसमें क्या होता था, सीपीयू अगर माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर उसका कुछ खुद का कुछ काम कर रहा है, इफ माइक्रो प्रोसेसर इज बिजी विथ कैरिंग आउट सम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन, then every time it has to stop for doing its operation and it has to check the status of IO device. Okay, now this is the repeatedly checking for the device कि वो ready है या नहीं है. So this can be overcome in the interrupt driven. अब इस interrupt driven में क्या होता है, ये आपका IO है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है. जब कभी IO डिवाइस को ट्रांसफर करना है, it will interrupt your microprocessor. It will interrupt your microprocessor. तब माइक्रोप्रोसेसर को पता चलता है कि अभी IO डिवाइस को ट्रांसफर करना है डेटा बिटवीन द मेमोरी एंड इटसेल्फ. Till that time microprocessor is not checking the status of IO. So that drawback we have overcome in interrupt driven. तो सीपीयू खुद का काम कर रहा है. जब IO डिवाइस को लगता है कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तब जाके इसको इंटरप्ट करता है. दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट ड्रिवन. और इंटरप्ट होने के बाद सीपीयू विल स्टॉप इट्स वर्क एंड गिव द चार्ज ऑफ द डेटा बस टू कैरी आउट द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द IO डिवाइस एंड द मेमोरी. This is called as interrupt driven IO. The next and the last DMA. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सपोज माइक्रो प्रोसेसर है या फिर माइक्रो कंट्रोलर. यहाँ पे आपका IO डिवाइस है, यहाँ पे आपका मेमोरी है. अभी यहाँ पे और एक पिक्चर में आता है, वो है DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर. अब ये क्या करता है, सी हियर, this microprocessor is doing its own job.
लेकिन पिछले जो 2 टाइप टेक्निक्स थे उसमें क्या होता है, द चार्ज ऑफ द डेटा बस इज गिवन but actually under the supervision of microcontroller or microprocessor. उसमें क्या होता है, माइक्रोप्रोसेसर को रुकना पड़ता है टिल द डेटा ट्रांसफर गेट्स ओवर. लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में आप क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में आपका और एक कंट्रोलर आ गया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, डीमैक. तो अगर आईओ डिवाइस और मेमोरी को अगर डेटा ट्रांसफर करना है, इन दैट केस योर जो आपका डेटा बस होता है आईओ, बिटवीन आईओ एंड मेमोरी, नाउ दिस विल नॉट बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. ये माइक्रोप्रोसेसर यहां से कट जाएगा, देन अंडर द सुपरविजन ऑफ डीमैक. तो डेटा ट्रांसफर जो होगा दैट विल बी द अंडर द सुपरविजन ऑफ डेटा मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर. In that case, microprocessor will be busy carrying out its own work. Okay, फिर उसको डेटा बस का चार्ज लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसका चार्ज ऑलरेडी डीएमएक ने लिया है. एंड इन दैट केस microprocessor or microcontroller is will be freed, or they will be they won't be responsible to carry out the supervision, but they will be busy carrying out its own work. तो माइक्रोप्रोसेसर का यहाँ पे काम भी चल रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. आईओ को डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है. This is called as DMAC, direct memory access controller. This is also called as IO module. Now there is a difference between IO module and IO device. दोनों में डिफरेंस है. IO device means आपका डिवाइस सपोज कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, they are called as IO devices. IO module means which is responsible to carry out the data transfer between the memory and the device. So that is called as IO module. So here your IO module is your direct memory access controller. Your IO module is direct memory access controller. I hope you have understood this concept of DMA. If there is any question, please ask. सर हाँ, सर इनिशिएट लेकिन ये ही करेगा ना, माइक्रो कंट्रोलर ही करेगा. इनिशिएट नहीं करेंगे जब आईओ डिवाइस को. हाँ अच्छा, हाँ ठीक है. इन दैट केस सपोज आईओ डिवाइस वांट्स टू ट्रांसफर द डेटा, then in that case what will microprocessor will do, it will give the charge to the DMAC. It will give the charge to the DMAC to see the supervision of the data transfer between the memory and the IO device, and it will cut itself from the data transfer, and it can carry out its own work. So giving out the charges to the DMAC will be done by the microprocessor. Yes, you are right. Initiate वो करेगा. Yes. हाँ. So your DMA controller takes over the control of the bus from CPU. बराबर है ना? DMA controller will take the control of the bus from the CPU. Is it fine? Yes, sir. Okay. Any more questions? Now, what are the different data transfer in the DMA? So there are total 4. Number 1, single transfer mode. Second, block transfer mode. Third, demand transfer mode. And the fourth one is hidden transfer mode. So we will see one by one. Single transfer mode, this is also simple. Single transfer mode में क्या होता है, whenever अगर data transfer करना है between IO device and the memory, the data will be transferred under the supervision of DMA, but 1 byte at a time. 1 byte at a time. और 1 बाइट होने के बाद फिर से वो बस का कंट्रोल सीपीयू के पास चला जाता है. 1 बाइट ट्रांसफर करो, फिर से सीपीयू के पास डेटा बस दो, फिर से 1 बाइट ट्रांसफर करो, फिर से डेटा बस का कंट्रोल सीपीयू को दो, फिर से 1 बाइट डाटा ट्रांसफर करो,
फिर से सीपीयू डेटा बस का कंट्रोल सीपीयू को दो. So this is taking time. This is happening in the single transfer. Block transfer. In block transfer, we are transferring more than 1 byte. We are transferring more than 1 byte. इसमें क्या होता है? इसमें the disadvantage is that the CPU has to remain out of the system or not having the access of system bus for a longer time. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे more than 1 byte आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो CPU will remain out of the system. CPU उसका खुद का काम करेगा, but it is away from the system because जब तक ब्लॉक ट्रांसफर नहीं होता तब तक it is still it doesn't get the access of the system bus for a longer time until all the bytes in the block are transferred. So that is called as a block transfer. Demand transfer में क्या होता है? Now in the demand transfer, the transfer will continue until the IO device has exhausted its data handling capacity. यानी जब तक डिमांड है तब तक डेटा ट्रांसफर कर रहा है. इसमें ब्लॉक में तो डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन until and unless the whole data is getting transferred. So the CPU has to wait for a longer time. The CPU has to wait for a longer time to get the access of the system bus. Okay, so that is called as a demand transfer. Now hidden transfer is what? Now here the DMA controller takes over the charge of the system bus and it will actually transfer data when processor does not need system bus. This is the best one. आपका CPU है, उसको दूसरा काम करना है जिस काम में सिस्टम बस की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली. Now system bus means data bus, address bus, control bus. तो आपका CPU ऐसा काम कर रहा है जिस काम में आपका सिस्टम बस का जरूरत नहीं पड़ रहा उसको. So CPU doesn't require your system bus to carry out its own work. So in that case, your system bus is free and your DMA controller can take the charge of the system bus and transfer data and transfer the whole data till CPU demands. यार CPU को जब तक नहीं लगता तब तक वो ट्रांसफर करेगा. And why it is called as hidden? Why it is called as hidden? Because the processor does not need the system bus when it is performing some execution. And actually this particular data transfer is hidden from the CPU. क्योंकि CPU को पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे डेटा ट्रांसफर चल रहा है, क्योंकि उसको सिस्टम बस की जरूरत ही नहीं है. तो उसको अगर सिस्टम बस की जरूरत नहीं है and till that time direct memory access controller is taking the charge of the system bus, so it is like it is hidden from the CPU. That is why it is called as a hidden transfer. That is why it is called as a hidden transfer mode. This is called as a hidden transfer mode. Any question in the 4 different DMA transfer modes? Any question? Sir, can you please explain the demand transfer? डिमांड ट्रांसफर में क्या होता है? आपके डिमांड ट्रांसफर में आपका जब तक आपका डिमांड है आईओ डिवाइस को जब तक सपोज एक्चुअली इसमें क्या होता है डिमांड ट्रांसफर में, यू हैव अ काउंटर, एक काउंटर सेट हो जाता है सपोज 10 सेकेंड्स. तो जब तक ये काउंटर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जब तक वो 0 नहीं होता है तब तक आपका पूरा डेटा ट्रांसफर होता है. नॉट पूरा, ये काउंटर जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आपका डेटा ट्रांसफर होता है. दैट मीन्स दिस काउंटर इज सेट बाय द your direct memory access controller. So that is called as a demand transfer. That DMA, direct memory access controller, will demand that the counter is set for so much of duration. Within this duration the data transfer has to take place. अगर पूरा डेटा ट्रांसफर होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो the remaining data will be transferred in the next cycle. So in the demand transfer, actually the counter plays an important role in which the data will be transferred within the given time. Is it fine now? Yes, sir. So actually in single transfer and block transfer, the concept is more clear.
Demand transfer depending upon the this one, and hidden transfer, it is in absence or it is hidden from the CPU. I hope this is clear now. Just a minute. Hello. हाँ करो. Yes, any question? Please go through this different DMA transfer mode and the data transfer technique, which I have taken for today. Any question from your side? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So shall we stop for today? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Manpreet, please take the attendance and give me the absent roll numbers. Okay. Yes, sir. Roll number 1, 3, 4, Present. 5, Present. 6, Present. 7, Present. 9, 10, Present. 11, 12, Present. 13, 14, Present. 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Present. 25, 26, 27, Present. 28, 29, 30, Present. 31, 32, 33, Present. 34, 35, 36, Present. 38, Present.